हेलो। तो यहाँ नाउ हम बात करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन की। बेसिकली वी आर डूइंग द 75 लीड कोड हार्ड क्वेश्चंस, 75 लीड कोड क्वेश्चन जो कि मस्ट क्वेश्चंस होते हैं एक इंटरव्यू के लिए, बैक एंड इंटरव्यू के लिए। फ्रंट एंड में भी पूछते हैं, डीएस ऐसा नहीं है, बट दिस मेजरली बैक एंड में ज़्यादा होता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट interview preparation. ठीक है, and we have a timelines of 1 to 3 months. ठीक है, तो and basically I can give you some backend interviews, what people generally ask in backend interviews, right? First is obviously the data structure part, right? Now you all must aware of the data structure part. The first is the DS part. Second is actually the system design. Like you may appear for, so maybe you may appear for SD1, 2, 3 plus, right? And so on. So what will happen? SD1 they won't ask you system design. Maybe they can ask you low level design. Some company में they ask you low level design. कुछ companies में ऐसा होता है कि they are asking you low level design. But अगर SD2 है और SD3 है, if one of the both or plus than SD3, they will ask you system design. So system design will cover in another series, somewhere another. और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, like your core subjects, right? Like OS, CN, right? DBMS. Then you have databases, SQL, NoSQL, right? Then projects, tools, right? Frameworks. Then you have languages, right? Maybe some OOP, object-oriented relational languages. So these are actually, I will prepare some another video to cover the roadmap of backend, like preparing for a backend interview. वो एक रोड मैप अलग इंटरव्यू में, अलग वीडियो में बनाएंगे, जिसमें विल जस्ट टॉकिंग अबाउट कि कौन से टॉपिक्स कब करना चाहिए. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर. अभी जो हमारा मेजर फोकस एरिया है इन दिस वीडियो, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर. एंड अभी इफ यू टॉक अबाउट की टाइमलाइंस, तो timelines we have less, right? 1 to 3 months of the preparation. So if you see the Leet Code, right? Leet Code mein, we have this 75 wala. If you go to Leet Code, so if you are just having 1 or 3 months of time, right? So there are 75 problems which are must to do, जो कि कोई भी इंटरव्यू में if you are appearing तो वो आनी चाहिए. So what we'll do, we'll focus on this 75 problems into this particular series. So मैं एक series start करने जा रहा हूँ. तो this 75 Leet Code 75. So if you see, so if you see, like we have different topics. We have array string, we have 2 pointers, sliding window, prefix, hash map, stack, queue, linked list, so on. These are all are the important topics, right? So what we'll do, like we have DP as well. What we'll do, we'll create a series of these 75 questions
फर्स्ट जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट. अगर वो ऐसे ही सिंपल कंसेप्ट इट विल डायरेक्टली कोड ऑन लीड कोड. इफ नॉट तो व्हाट वी कैन डू कि जैसे मैं नॉर्मल पढ़ाता हूँ कि आई जस्ट use pen and paper and I first explain the concept, right? First I'll explain you the concept and then what can I do? I can just code on a pseudo code like on plain paper. If you have watched my previous video, you know the tactics. So first we explain the concept on the paper, then we try to write a pseudo code on a paper, and then once we are done with this, तो हम फिर लीड कोड पे सेम क्वेश्चन करके विल ट्राई टू फिगर आउट कि वो चल रहा है नहीं है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, कैसे उसको ओवरकम करना है. तो दिस इज़ आवर वे. ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ेंगे. तो इस तरीके से आई विल प्रिपेयर दिस 75 वाला सीरीज लीड कोड का. ठीक है, काफ़ी मेहनत वाला काम है और ये अभी संडे को ही बैठा हूँ, मैं संडे को बना रहा हूँ. तो try to watch these videos in a series. First explanation, then pseudocode, then video, right? So try to watch this in a series. और अगर तुम ये कर लेते हो, ठीक है, अगर ये 1 to 3 months वाला तुम ये 75 questions पूरे कर लेते हो, तो mostly there is high chances you can crack jobs. Then there will be high chances for cracking product based and services. Even for a service base, if you are going to service base, I won't usually recommend a service based company or a product based company. So generally, like, you should target for a product based company. So whatever the tier 1 companies, right, whatever you call that, man, pen, whatever, वो भी क्रैक कर सकते हो if you have. But thing is that कि it's not कि बस पूरा सीरीज देख लिया और now you have the 75 question in your bucket और इंटरव्यू में चले गए और हो गया, ऐसा नहीं होगा. तो you should actually have the knowledge of the concept कि वो कैसे हो रहा है, कैसे क्वेश्चन बन रहा है, कि कभी उसका कोई पैटर्न भी आएगा कि लेट्स सपोज कि हमने ये 75 क्वेश्चन में से, और लेट्स सपोज कि हमने कोई भी एक क्वेश्चन ले लो कि जैसे हमने पाथ सम किया, तो नाउ ये पाथ सम थर्ड है, तो लेट्स सपोज कि इसका कोई पैटर्न आ गया, पाथ सम 2 आ गया, पाथ सम 1 आ गया, या कोई दूसरा पैटर्न आ गया जो कि सेम सॉल्यूशन पे बेस्ड है, तो यू शुड बी एबल टू डू दैट. तुम्हें करना आना चाहिए. वो तभी करता आएगा जब यू नो द थ्योरी, यू नो द कंसेप्ट, तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है. अगर वो क्लियर है तो ये क्वेश्चंस का कोई भी वेरिएंट आ जाएगा, तुम कर पाओगे. वेरिएंट मतलब क्वेश्चन सेम है, मतलब सॉल्यूशन सेम है, अप्रोच सेम है, कुछ तो माइनर मॉडिफिकेशन करके दूसरा सॉल्यूशन लाना है. तो अगर ये 75 क्वेश्चन कर लेते हैं तो बहुत कुछ प्रिपेयर हो जाएगा. ठीक है, बट समझ के करना, उसको कंसेप्ट को समझ के करना. किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम आए तो वी कैन क्रिएट अनदर वीडियो, यू जस्ट पुट ऑन कमेंट. ठीक है, तो ठीक है, हम नई सीरीज स्टार्ट करते हैं. इसके पहले यू कैन सी डिफरेंट प्लेलिस्ट. अगर तुम्हें और भी डाउट हो तो डीपी का प्लेलिस्ट बनाया था मैंने, रिकर्शन का प्लेलिस्ट बनाया है. ठीक है, मैं अलग से एक रोड मैप बना दूंगा इफ यू वांट दिस पर्टिकुलर थिंग्स इन मोर एक्सप्लेन वे कि ये क्या क्या कितने मंथ में करना है, कैसे करना है. और हम एक और टाइमलाइन के लिए बनाएंगे. ये तो चलो 1 to 3 मंथ्स के लिए, जिसके पास लंबा टाइम है, लेट्स सपोज कि आपके पास 5-6 मंथ है, तो हम और क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं. वो हम बाद में बनाएंगे. अभी अभी इसको फोकस करते हैं. ठीक है, चलो बाय.